Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqui, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC-Stores, Nishtar Road, Karachi. Today my topic is from first year biology, section 3, biodiversity. Section 3, biodiversity. Chapter 10, Kingdom Animalia. Chapter 10, Kingdom Animalia, page 192-242. 10.10.1, Adaptations for an Aquatic Life, page 225. Superclass Tetrapoda, 4 legs, page 225. Class Reptilia, to crawl and creep. Today we are going to discuss class Reptilia, page 227. Past history of Reptilia. We are going to discuss this also. Past history of Reptilia, page 227. Reptilia, successful land vertebrates. Reptilia, successful land vertebrate. We are going to discuss this. Reference Sindh textbook of biology for class first year, Sindh textbook board. First year biology. Section 3, biodiversity. Class Reptilia. Reptilia is a group of about 5,000 species all around the world. Dry skin, covered over by epidermal scales. देखिए एम्फीबियंस में आपने देखा नो स्किल्स, बट इनकी स्किन के ऊपर एपिडर्मल स्किल्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल है एंड क्रॉल ऑन लैंड. टर्टल्स वगैरह को पानी में भी जाते हुए देखें, लेकिन टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल. 2 pairs of limbs for crawling. 2 pairs of limbs. Limbs are pentadactylous with horny claws. Snakes have no limbs. ये वाइट रेप्टाइल्स हैं जिनमें लिम्स नहीं होते, पैर नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते. लिम्स, नो लिम्स. Snakes have no limbs. Poikilotherm, cold-blooded. Lay eggs on land covered over by a leathery shell. Their eggs are covered over by a leathery shell. Amphibian में आपने देखा कि पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं और जेली नुमा एग है, लेकिन इनके एग पे लेदरी शेल है. द एम्ब्रियो डेवलप ऑन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक एंड एल्ब्यूमिन. एग के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक एंड एल्ब्यूमिन. क्लास रेप्टिलिया. रेप्टिलिया आर एमनियोटा. अभी हमने जिक्र किया. Reptilia are amniota. Due to the presence of large quantity of yolk in the eggs, the reptilia, birds, mammals are called amniota. Due to the presence of large quantity of yolk, इनके egg में large quantity of yolk होता है egg के अंदर. Fish and amphibians are called amniota. Fish और amphibians में क्या कहलाते हैं? amniota. उनके eggs के अंदर large quantity of yolk नहीं होता. Amphibians का एक अलग लेक्चर मैंने लिया, उसमें आपने देखा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनसाइड वाटर होती है, जिसमें मेल अपने स्पर्म्स और फीमेल अपने एग बाहर खारिज करते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जेली नुमा एग होती है, टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट होता है एम्फीबियंस के अंदर. फिश एंड एम्फीबियंस आर कॉल्ड एमनियोटा. पास्ट हिस्ट्री देखिए. 2 रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड मच अर्लियर. द मीसोजोइक एरा 225 to 70 million years ago was the time when the reptiles dominated the earth. This was the era of reptiles, era of dinosaurs. This was the era of the best known reptiles on the earth called dinosaurs. Dinosaurs का era कहलाता है Mesozoic era. Dinosaurs, most successful land vertebrate. Dinosaurs. Reptilia.
reptiles dominated the earth. The ancestors of the present day reptiles also appeared during this period, during this Mesozoic period. Ancestors जो मौजूदा reptiles हैं, about 70 million years ago age, when this era came to an end, the Cenozoic era appeared. उसके बाद के Mesozoic के बाद Cenozoic era आया, उसमें डायनासोर्स पेरिश हो गए, डायनासोर्स खत्म हो गए. Past history, the era of dinosaurs, Mesozoic era. Mesozoic era is the era of dinosaurs. This era was ruled by best known giant reptiles called dinosaurs. Giant reptiles called dinosaurs. The terrible lizards on earth. Past history. Brontosaurs. Past history, 82 feet long and 16 feet height. Brontosaurs. Brontosaurus was the largest, whereas the Tyrannosaurus, 60 feet long and 20 feet height, were both of its powerful jaws containing a large number. ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में थे. Tyrannosaurus. Jurassic Park फिल्म में आपने देखा होगा Tyrannosaurus. Almost 1 foot long powerful teeth. 1 foot long powerful teeth. ये देखिए ये किस तरह से खा रहा है इसको. Most terrifying creature ever on the earth. Most terrifying creatures on the earth. Past history. Brontosaurus and Tyrannosaurus. Tyrannosaurus most. Past history. The era of dinosaurs, Mesozoic era. Mesozoic era is the era of dinosaurs. Brontosaurus, era of dinosaurs. Mesozoic era, era of dinosaurs. Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Rex. Jurassic Park में आपने देखा. These are Tyrannosaurus Rex. The era of dinosaurs. Reptiles is successful land vertebrate. कैसे? Reptiles are the first group of land vertebrate who successfully adopted for the land life. How? कैसे? They don't have to go to the water for reproduce for reproduction as the amphibian do. Amphibian में देखा external fertilization होती है. मेल अपने स्पर्म्स पानी में खारिज करता है, फीमेल अपने एग. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेपरेट लेक्चर मैंने एम्फीबियंस में देखा, उसमें आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. एग जेली नुमा पानी के अंदर टेडपोल लार्वा बनता है. यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा. They don't have to go to water. Key to their success on the land is their internal mode of fertilization. Internal mode of fertilization, an egg covered with shell, amniotic egg with leathery shell, which is permeable to many gases but impermeable to water. Land में देते हैं अंडे, जाके अंडे देते हैं. Shell, leathery shell होता है उनके ऊपर. The ability to sustain the frequent change of temperature on the land slowed down the loss of body water was brought about by development of exoskeleton. देखें एम्फीबियंस के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं थी, नेकेड स्किन थी. यहाँ पर एक्सोस्केलेटन हॉर्नी स्केल्स एंड प्लेट्स ऑन द बॉडी. तो लॉस ऑफ बॉडी वाटर बाय ये डेवलपमेंट की वजह से दे वर मोस्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स. सक्सेसफुल लैंड बट दिस वॉज सप्लीमेंटेड बाय मच डेवलप्ड किडनी बहुत वेल डेवलप्ड किडनी. सस्टेन वाटर इन द बॉडी, जो पानी को सस्टेन कर दी, पानी को रिटेन कर रही बॉडी के, किडनी इन द बॉडी एंड एक्सक्रीट आउट कंसंट्रेटेड यूरिन. पानी को रिटेन करने ड्राई कंडीशन में किडनी डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड किडनी टू रिटेन द वाटर इन द ड्राई कंडीशन. दे डेवलप्ड लिम्स एंड अपीयरेंस ऑफ क्लॉज मेड देम फिट नॉट ओनली to move, dig and climb and also to defend themselves against the predators. ये भी एक बहुत सक्सेसफुल एडॉप्टेशन इनकी.
डेवलप लंग्स डेवलप हुए, हार्ट मेड पॉसिबल द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर मच हायर मस्कुलर एक्टिविटी नीडेड फॉर मोर एक्टिव लाइफ ऑन अर्थ। हार्ट और लंग्स की डेवलपमेंट भी और किडनी की डेवलपमेंट। सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स, reptiles, common reptiles around the world: tortoise, turtles, lizards, snakes, crocodiles. Sphenodon, living fossil, the only reptile of its kind, is restricted to New Zealand. Sphenodon. Common reptiles around the world are tortoise, turtle, lizards, snakes, crocodiles. Sphenodon only in New Zealand. कॉमन रेप्टाइल्स ऑफ पाकिस्तान अमंग लिजर्ड्स, वॉल लिजर्ड बहुत कॉमन है, घरों में पाई जाती गार्डन लिजर्ड, यूरोमेस्टिक्स। स्नेक्स में कौन कौन से पाकिस्तान में? कोबरा, वाइपर, क्रेट, पाइथन। स्नेक्स आर द लिमलेस, ये स्नेक्स आर, ये भाई हैं जो कि लिमलेस हैं। स्नेक्स आर लिमलेस रेप्टाइल्स ऑन अर्थ विच क्रीप ऑन लैंड बाय अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। स्नेक्स में लिम्स नहीं होते हैं, दे आर लिमलेस। Some snakes are poisonous, बहुत poisonous भी होते हैं। Their toxin is called venom, may be neurotoxic or hemotoxic. हीमो को ब्लड या न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरॉन नर्व्स पे अटैक करते हैं। वेनम खतरनाक होते हैं। ये देखिए इनका फैंग है। टॉक्सिन इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ प्रे थ्रू फैंग्स, कर्व टीथ। दीज आर देखिए कर्व टीथ, प्रोटेक्टिव टीथ है इनके। सेकेंडरी वेनम डक, ये फैंग है। ये देखिए वेनम, कंप्रेसर मसल्स, वेनम ग्लैंड या वेनम आ जाता है, वेनम आ जाता है। ये खतरनाक, कुछ वेनमस होते हैं। अमंग द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स द क्रोकोडाइल आल्सो फाउंड इन पाकिस्तान। रेप्टाइल्स ऑफ पाकिस्तान: लिजर्ड्स and crocodiles of Pakistan, wall lizard of Euromestis, गिरगिट, जिसे कॉमनली गिरगिट कहते हैं। इंडस क्रोकोडाइल यहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में पाए जाने। स्नेक्स ऑफ रेप्टाइल्स: हिमालयन पिट वाइपर, रसल वाइपर, क्रेट, सिंधी क्रेट कहते हैं, और ऑफ कोर्स कोबरा। स्नेक्स ऑफ कॉमन रेप्टाइल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड: टर्टल्स। Common reptiles, turtles are also reptiles. Common reptiles found around the world: tortoise are also reptiles. Tortoise are also around the world. Common reptiles around the world: lizards, बहुत सी किस्म की lizards होती हैं। चंद एक डायग्राम, खूबसूरत lizards यहाँ दिखाई गई हैं आपको, ताकि आपको सब याद हो जाए। कॉमन रेप्टाइल फाउंड अराउंड द वर्ल्ड: स्नेक्स, कुछ स्नेक्स दुनिया में जो पाए जाते वो दिखाए गए। दीज आर द फ्यू रेफरेंसेस विच वर यूज ड्यूरिंग दिस लेक्चर। इन रेफरेंसेस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई। एक्नॉलेजमेंट के तौर पे रेफरेंस का देना यहाँ ज़रूरी है, और हमेशा से मैं लेक्चर्स में देता रहा हूँ, और पिछले लेक्चरों में भी ये रेफरेंसेस यूज़ होते रहे। इन रेफरेंसेस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई। तमाम रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, एक्नॉलेजमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चन। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कोई भी सवाल हो मेरे पिछले लेक्चर से मुतालिक, इस लेक्चर से मुतालिक, कमेंट बॉक्स में सवालत करें। इंशाल्लाह मैं तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।